everyone. Good morning. I am K. Sharma and I welcome everyone on this channel that is CSR IS Academy. This is an ongoing lecture of the Panse. It will be continuation of the January lectures of current affairs. It will be from 5th of January till 9th of January. और इसमें we'll be discussing the most important topics which happened in the previous in that period. Before proceeding further, we are running a mentorship program. It's an ongoing process. It's a growing institutions, and we are having a great mentorship program. And अगर आपको लगता है कि you require mentorship, please do contact on this number. The person who will be receiving it is Chandrasekhar sir. Chandrasekhar sir. Okay. Sir is the founder of this channel, ठीक है, and he's a great mentor, he's a great teacher, and if you are in any stage, be it prelims, mains, or interview, do have a conversation, whether it's GS, optional, anything, prelims, anything. Have a word, and topics for today, that is table of content which we have is first of all is growing Indian economy. Though NSO ने predict किया है कि our economy will be moving 7.3% से it will increase. Okay, 1 second. 7.3% से it will increase. NSO is National Statistics Office. ठीक है, we'll discuss further in the below slides. The second is पृथ्वी विज्ञान स्कीम. बहुत सारे स्कीम्स को एकजुट करके पृथ्वी स्कीम बना दिया गया है और बहुत ही काफ़ी डिटेल में वी विल बी टॉकिंग किस तरीके से इट्स अबाउट द स्पेस रॉकेट्स टेक्नोलॉजीज एंड ऑल दैट. द थर्ड इज क्रिप्टो सर्च, इंडियन क्रिप्टो सर्च. किस तरीके से फाइनेंशियल यूनिट ने एक क्रिप्टो पे लगाम लगाई है या किस तरीके से चीज़ों को रेगुलेट कर रहे हैं. हियर ऑल दीज थिंग्स आर हियर. The fourth is Supreme Court reviews judicial function. So a High Court judgment has been questioned by this Supreme Court. So it's about that. Then we have SC appointment. So it's a commission जिसके appointment Supreme Court करता है. It's all about that. The sixth is National Conclave of Primary Agricultural Credit Societies. आई एम श्योर आपने न्यूज़ में सुना होगा. सो वी विल बी टॉकिंग इन डेप्थ इसके बारे में. सतवां है विकसित भारत संकल्प यात्रा. ये मोदी जी का एक ऑनगोइंग यात्रा है विच इज़ सब्ज्यूमिंग मेनी ऑफ द स्कीम्स. तो हम लोग एक डिटेल्ड रूप से देखेंगे चीज़ें हैं क्या. द एट्थ इज़ आदित्य L1. आदित्य L1 बहुत फेमस हुआ है अभी. इट्स अ प्रोजेक्ट ऑफ इसरो जो कि विच विल बी रीडिंग द एटमोसफियर ऑफ सन. ठीक है, वी विल बी टॉकिंग इन डेप्थ कि किस तरीके से आदित्य L1 का फंक्शनिंग है, क्या इसका एग्जैक्ट रोल है, लैग्रेंज पॉइंट क्या है एंड ऑल दैट. एंड द नाइन्थ वन इज नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स. लास्ट ईयर इस पे एक क्वेश्चन भी आया है स्पोर्ट्स अवार्ड्स पे कि ध्यानचंद अवार्ड किसको बोलते हैं, द्रोणाचार्य किसको बोलते हैं. एंड यू हैव टू मैच द पेयर्स में था बट यू हैव टू मैच द फॉलोइंग. सो इट्स लाइक दैट. ठीक है, तो लेट्स प्रोसीड फर्दर. So the first topic today is growing Indian economy, NSO, National Statistical Office. तो इन्होंने क्या कहा है कि इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 7.3% इन द फाइनेंशियल ईयर 2023-24. ओके, विच इज अ पार्ट, NSO इज अ पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स. आजकल तो ऐसी चीज़ें नहीं पूछते हैं बट स्टिल हैव एन आइडिया. And this is in addition to the 7.2% growth rate that was predicted for the previous financial year. जो इनके रिपोर्ट थे वो फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट पे बेस्ड थे. व्हाट इज फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट? इट इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम. ठीक है, जस्ट 1 second. इट इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम जस्ट बिफोर the official projection of GDP comes out.
तो इसको मैं एक बार पढ़ देता हूँ कि आर यू यूजुअली, ये पहली बार आया था 2016-17 में, एंड आर यूजुअली रिलीज्ड बाय द एंड ऑफ फर्स्ट वीक इन जनवरी। ये रिप्रेजेंट करते हैं फर्स्ट ऑफिशियल प्रोजेक्शन ऑफ जीडीपी ग्रोथ फॉर द फिस्कल ईयर। ठीक है। असाइड फ्रॉम दैट दे आर ऑल्सो नोन एज advance estimates, since they are released well in the advance of the end of the fiscal year, which runs from April to March. Now here is a catch. Catch क्या है यहाँ पे कि it is released shortly after the third quarter और Q3 which ends in October. ठीक है, November, December and January makes the including January makes the Q4. तो नवंबर एंड दिसंबर विच एंड्स इन अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, Q3 हमारा। हाउएवर दे आर मिसिंग द ऑफिशियल Q3 जीडीपी, मतलब अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के डेटा इसमें नहीं होते हैं। सो इट्स अ कैच कि इफ अ क्वेश्चन कम्स कि इफ ए इंक्लूड्स द Q3, दैट इज नवंबर, दिसंबर एंड दिस अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर data, so you have to be thorough that no, advance estimate doesn't have that Q3, which are released as part of the second as advance estimates at the end of February. इनके सिग्निफिकेंस क्या है? द यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री यूजेज एफएई जीडीपी एस्टिमेट्स टू डिटरमाइन द बजटरी एलोकेशंस। अभी जैसे हमारा बजट आने वाला है फरवरी में, जनवरी एंड में, और हमारा सर्वे आने वाला है, हमारा जीडीपी का पूरा प्रोजेक्शन होने वाला है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसको अभी ऑनगोइंग कमिंग मंथ्स में होने वाली हैं। सो इट हेल्प्स देम। तो बजटरी एलोकेशंस में हेल्प करते हैं कि विच इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ सिग्निफिकेंस, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। हमारा नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट, द नॉमिनल जीडीपी's ग्रोथ रेट एज वेल एज इट्स एब्सोल्यूट अमाउंट मस्ट बी एस्टिमेटेड व्हेन क्रिएटेड अ बजट। तो नॉमिनल जीडीपी हमें पता होना चाहिए। तो नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी होता है, रियल जीडीपी इज नॉमिनल जीडीपी माइनस inflation, and this nominal GDP, इसमें होता है GDP given in current prices without, यहाँ पे ये कैच है, without adjustment for the inflation। ठीक है, तो नॉमिनल जीडीपी इसको बोलते हैं। तो ये नॉमिनल जीडीपी के कैलकुलेट करने में हेल्प करता है दीज एफएईज। इट ऑल्सो असिस्ट इन कंप्यूटेशन ऑफ इन्फ्लेशन एंड रियल जीडीपी। रियल जीडीपी किसको बोलते हैं? तो नॉमिनल जीडीपी जिसमें इन्फ्लेशन एडजस्टेड नहीं है, दैट मीन्स उसमें इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर देंगे। नॉमिनल में इन्फ्लेशन एडजस्टेड नहीं होता है, इट्स बेस्ड ऑन द करंट प्राइसेस एंड दे आर नॉट एडजस्टेड, इन्फ्लेशन इज नॉट एडजस्टेड। इन रियल वी एडजस्ट द इन्फ्लेशन, दैट मीन्स नॉमिनल जीडीपी माइनस इन्फ्लेशन। ठीक है, तो इट ऑल्सो हेल्प्स इन कैलकुलेटिंग द रियल जीडीपी। दिस ईयर ओवर ईयर वेरिएशन इन रियल एंड नॉमिनल जीडीपी इंडिकेट द डिग्री ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, इन्फ्लेशन आपको see I am teaching you all this, go and revise your concepts on inflation। FAE calculation अभी आगे benchmark indicator method है, we'll talk in that। okay, तो NSO का first based estimate of national income for the fiscal year 23-24, the construction industry, यहाँ पे मैं इसको यूज करता हूँ। The construction industry is expected, one second, is expected to grow by double digit by 10.7%। जो construction industry है, that is expected to grow by 10.7%। It was noted that every economic sector had experienced growth of more than
every economic sector, every economic sector had experience of growth than 6%. That means इसमें एक exception है, which is agriculture and related sectors, where growth is only expected to be 1.8%. मतलब कि almost all the sectors have seen the growth. exception is exception is agriculture and related sectors. The benchmark indicator approach is used to compile the advanced estimates of national income, which are indicator based. मैं अभी बताता हूँ बेंचमार्क इंडिकेटर के बारे में. इट स्टेटेड दैट द एस्टिमेट्स फॉर द प्रायर ईयर 2022-23 आर एक्स्ट्रापोलेटेड यूजिंग पर्टिनेंट सेक्टर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर. एक्स्ट्रापोलेटेड सुन के डरना नहीं है. इट्स सिंपली सेज कि प्रीवियस चीज़ों को देख के वी आर गिविंग एन एस्टिमेट कि पहले ऐसा हुआ है तो अभी भी काइंड ऑफ like that. Data from numerous ministry, department and private agency are used to prepare this report. Let's go on study this benchmark indicator approach. What is the benchmark indicator method? Is the foundation of for the AE's advanced estimates compilation process. This means that estimates for the prior year, those are B in this case, are extrapolated. That means मतलब projected using pertinent metrics that represent the sectoral. मतलब बेसिकली कुछ कुछ चीज़ें का बेंचमार्क एक बना हुआ है, उसको लेके प्रोजेक्शन जब हो रही है उसको बेंचमार्क, एक रफ सेंस में आइडिया आप ऐसे ले सकते हैं. हैव अ बेसिक आइडिया. यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है जीडीपी का. लेट्स रिवाइज दैट. तो जीडीपी इज इक्वल टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. Government expenditure, one second. Government expenditure plus government investment plus gross investment plus private consumption plus exports minus imports makes GDP. दिमाग में ये रट जाओ, ये ज़रूरी है रटना. GDP maps the economy from the expenditure or demand side by totaling all the expenditures. Now GVA, gross value added. I know इतना easy way में GDP नहीं पढ़ाते हैं, but just to revise the concept, that's it, कि एक बार दिमाग में वो आ जाए. ये important है कि डिमांड साइड को रिफ्लेक्ट करता है जीडीपी. जीवीए में जीडीपी जो जीडीपी है प्लस सब्सिडीज ऑन प्रोडक्ट्स माइनस टैक्सेस ऑन प्रोडक्ट्स, ये दो चीज़ इंपॉर्टेंट है. ये प्लस जीडीपी में क्या करेंगे, जीडीपी में जब सब्सिडी को ऐड कर देंगे, सब्सिडी ऐड एंड माइनस टैक्सेस ऑन प्रोडक्ट्स, तो हमारा क्या निकल गया, जीवीए. ठीक है. तो it is how the GVA is, gross value added, is calculated. The value added by various economic sectors including services, industry and agriculture is mapped out by GVA. So basically this was all about this particular thing. Let's move to the next topic. So Prithvi Vigyan scheme. So the government has chosen to spend rupees 4,797 crores to implement the comprehensive Prithvi Vigyan scheme. ठीक है. This was the news. It has it consists of 5 active sub schemes: ocean services modeling application, resources and technology, OSMAT. The second is polar science and cryosphere research, PACER, seismology and geosciences, SAGE, atmosphere and climate research modeling observing systems and services across, research, education, training and outreach, reach out. So these 5 programs are subsumed under this Prithvi Vigyan scheme. So in order to document the vital signs of the earth system and change, the Prithvi scheme aims to augment and maintain long-term observation of the atmosphere, ocean, geosphere, cryosphere and solid earth. इसका अगर आप मेजर गोल भी पढ़ोगे ना, तो प्रिडिक्टिंग वेदर, ओशियन,
climate hazards, and understanding the science of climate change. It is the major objective decided by the department, policymakers basically. It is also meant to be used in the creation of modeling systems for comprehending and forecasting climate, ocean, and weather hazards, as well as comprehending the science behind climate change. तो लॉन्ग टर्म ऑब्जर्वेशन तो इनका है ही ऑफ द एटमोसफेयर, ओशियन एंड ऑल दैट, उसके साथ इनका फोरकास्ट करना क्लाइमेट एंड ऑल दैट इनका मेजर वर्क रहेगा. पेरेंट मिनिस्ट्री कौन सी है? तो इट्स मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस. ठीक है, हियर यू कैन सी the second goal of the extension and maintenance of long-term observation of the atmosphere, geosphere, cryosphere, and solid earth to record the vital signs of the earth system and change. Earth's polar and high seas region are being explored in an effort to find new resources and phenomena. Basically ये इसके बारे में डिसाइड कर रहा है, ये बता रहा है कि किस तरीके से इट विल बी यूज्ड इन अदर फील्ड, just using some other words. Okay, तो एक बार let's do an analysis कि क्या. तो earth system science study all 5 components of the earth system, including the atmosphere, hydrosphere, geosphere, cryosphere, and biosphere. Atmosphere, hydrosphere, geosphere, cryosphere, and biosphere, as well as their complex interactions. All facets of Earth system science are comprehensively addressed by the Ministry of Earth Science. All 5 of the Earth system component will be comprehensively addressed by the Prithvi program in order to enhance knowledge of Earth system sciences and the nation dependable services. The interdependent component of the Prithvi scheme are executed in an integrated manner by means of joint efforts of the relevant institutes under Ministry of Earth Science, and it will facilitate the creation of innovative programs and integrated multidisciplinary earth science research across various Ministry of Earth Science institute. Now what I want to tell you here is the government is now, पहले क्या था कि इंडिविजुअल बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, बट नाउ द गवर्नमेंट वांट्स कि हर मिनिस्ट्री का साथ हो, ताकि एक इंटीग्रेटेड अप्रोच कॉम्प्रिहेंसिव सारे कंसर्न्स को रेज करते हुए उनके सॉल्यूशंस को निकालते हुए वी आर बिल्डिंग अ प्रोजेक्ट. सो दिस इज द बेसिक अप्रोच. इन एडिशन, exploring living and non-living resources for the sustainable exploitation, these integrated R&D efforts, research and development, will aid in addressing the major challenges of weather and climate, ocean and all that, seismological science and services. ये बेसिक हुआ पृथ्वी विज्ञान स्कीम के बारे में. नाउ लेट्स टॉक अबाउट मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस. तो it's a ministry of exploring and exploiting marine life, non-living resources for the nation in a sustainable, as well as investigating the Arctic, Antarctic and Himalayan regions. Or the ministry carries out its operational services and research and development through 10 institutes. IMD है, I think ये पूना में है इसका हेडक्वार्टर, not very certain, just look. National Center for Medium Range Weather Forecasting, Center for Marine Life Resources and Ecology, National Center for Coastal Research, National Center for Seismology, National Institute of Ocean Technology, Indian National Center for Ocean Information Services, it's in Goa, National Center for Polar and Ocean Research, Hyderabad, Indian Institute of Tropical Meteorology, Pune, Indian Center for Earth Sciences. तो 10 इंस्टीट्यूट्स हैं मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर, 10 इंस्टीट्यूट्स, और वो उनका मदद लेके दे हेल्प गेट इन ऑल दिस. द मिनिस्ट्री फ्लीट ऑफ कोस्टल एंड ओशियोनोग्राफिक रिसर्च वेजल्स ऑल्सो प्रोवाइड द नेसेसरी रिसर्च सपोर्ट फॉर द प्रोग्राम. जस्ट हैव एन आइडिया. अभी हमने ऊपर पढ़ा कि 5 ऑनगोइंग स्कीम्स को सब्स्यूम किया है पृथ्वी विज्ञान स्कीम ने. लेट्स टॉक अबाउट दोज. ओ स्मार्ट. तो ओ स्मार्ट इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? to establish early warnings weather systems and advance ocean research. It covers ocean development activities including OSMAT किससे related है? Ocean. दिमाग में ये रखना है.
activities including resource, technology, services, science, and observation. It also gives the background in science and technology needed to implement different blue economy component. Blue economy mein we are exploring outside our this nautical miles which is given to a country, 12 nautical miles, और बहुत सारा हम लोग उसके अंतर्गत we are advocating various things in blue economy. Have a read about it. पेसर, तो पेसर का क्या है? बिल्डिंग अ रिसर्च वेसल, ठीक है, वेसल मतलब शिप, फॉर द पोलर रीजन्स, बिल्डिंग ऑफ अंटार्कटिकाज थर्ड रिसर्च बेस. हमारा दो आई थिंक गंगा और मैत्री है, नॉट वेरी सर्टन, हैव अ लुक एट इट. Indian scientific endeavors in the Southern Ocean expedition and the Arctic polar expeditions. The National Center for Polar and Ocean Research (NCPOR) is in charge of carrying it out. मतलब NCPOR is research for PACER और NCPOR comes under Ministry of Earth Science. ऐसे दिमाग में रखना. SAGE, इसका क्या काम है? सिस्मोलॉजिकल मॉनिटरिंग एंड माइक्रोजोनेशन. सिस्मोलॉजी, अर्थ क्वेक एंड ऑल दैट, उससे रिलेटेड इसको बात कर रहे हैं हम. जियोडायनेमिक्स एंड सरफेस प्रोसेसेस. इंडियन ओशियन, डीप ओशियन ऑब्जर्वेशन एंड डायनेमिक्स ऑफ लिथोस्फेरिक इवोल्यूशन, ठीक है. साइंटिफिक डीप ड्रिलिंग इन दी कोयना ट्रैपलेट सिस्मिक जोन. देखो नहीं पता है इसको, मैप में एक बार गूगल कर लेना, गूगल इट. Seismicity and earthquake precursor, setting a facility for geochronology. Fancy words है, just have a look. Across, it will improve weather and climate and ocean forecasting and service. Weather, climate and ocean forecasting and services. Cover alert for heat waves, thunderstorms, storm surges and cyclones. अभी उड़ीसा में साइक्लोन आया था, probably across was there, to alert people. 8 sub scheme for each of these elements are included in the overarching across. इसमें खुद 8 scheme है, so it's a big scheme actually. तो क्या क्या है? Monsoon Mission 3, monsoon convection, clouds and climate change, commissioning of polarimetric Doppler weather radars, weather and climate service, atmospheric observation network, forecast system upgrade and high performance computing system. So these 8 schemes are included. Now the reach out program includes the following: International Training Center for Operational Oceanography, the program for the development of skilled manpower in earth science and earth system sciences and research and development in earth science. Main objective क्या है? Supporting various R&D activities, developing useful collaboration with international organization for the mutual transfer of advanced knowledge in science and technology, and to provide services to developing countries, and to develop skilled and trained manpower in earth sciences with the support of academic institution in the country and abroad. दिमाग में ये रखना है कि इससे हम लोग मैन पावर ट्रेन करके वी आउटसोर्स इट. आउटसोर्स इसको आप ऐसे देखो कि it will are sent to those needed places या where we need it and we train through reach out, ठीक है, ऐसे. Okay, so let's move to the next topic. Indian crypto surge after FIU notice. So इसका न्यूज़ में क्यों था? Because FIU, that is Financial Intelligence Unit, it issued compliance notices to the 9 global crypto exchange क्योंकि Indian platforms experienced increased trading volumes, deposits and user registration. तो FIU ने 9 ग्लोबल क्रिप्टो एक्सचेंज को बताया कि कंप्लायंस नोटिस को भेजा है. अबाउट द इम्पैक्ट, Indian investors initially drawn to foreign exchange due to budget those are buys taxation return to familiar local setups. So what is FIU? India FIU. So FIU IND operates under Department of Revenue, Government of India, Ministry of Finance होगा.
Its primary function is to gather financial intelligence related to offenses under the PMLA, Prevention of Money Laundering Act 2002. Established in November 2004, it directly reports to the Economic Intelligence Council, EIC. The EIC is headed by the Finance Minister, indicating its high level association with Economic Intelligence Master. नाम से ही सब चीज़ क्लियर है. थोड़ा let's talk about cryptocurrency. It's a digital or virtual currency utilizing cryptography for security. It operates in a decentralized manner, free from government or institutional control. Transactions are recorded on a public digital ledger known as blockchain. Cryptocurrency acquisition can occur through mining, involving solving mathematical equation to validate transaction. आई थिंक इससे क्लियर होगा कि क्रिप्टो करेंसी क्या है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सुप्रीम कोर्ट रिव्यू reinforcing judicial function. The Supreme Court has swiftly reviews a Calcutta High Court ruling on underage sexual abuse. इशू क्या है कि द जजमेंट ओवरस्टेप्स, यहाँ पे ओवरस्टेप, जुडिशियल ओवररीच its boundaries by suggesting amendments to laws and establishing moral conduct principles for adolescents. तो सुप्रीम कोर्ट क्या रिव्यू किया, कैलकाटा हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया जिसमें उन्होंने मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट प्रिंसिपल्स और वैल्यूज को अप्लाई किया या उनसे रिलेटेड बातें की. उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू किया. द क्वेश्चन हियर इज सेपरेशन ऑफ पावर. The separation of power between judiciary, executives and legislatures. Executives किसको बोलते हैं? ये हमारा कैबिनेट एंड मिनिस्टर्स हो गया, मिनिस्टर्स अपॉइंटेड, ठीक है. लेजिस्लेचर, ऑल द पीपल सेलेक्टेड और इलेक्टेड फॉर as not for as MPs in union or MLAs or MLCs in this क्या बोलते हैं स्टेट, ठीक है. तो यहाँ पे वही बात कर रही हो कि जज, सुप्रीम कोर्ट का व्यू क्या रहा जज के रोल पे. द जज रोल इज टू इंटरप्रेट एंड अपहोल्ड लॉज, नॉट एनफोर्स पर्सनल बिलीव्स or advocate social change for the bench, because of course it's a part of the legislature. वो उनका काम है to bring out the policies. So it's a good take if you ask me. Why they can identify legal gaps for legislative action and assess laws alignment with the country legal basis. They should not act as social influencers. Okay. The Supreme Court intervention aims to affirm the Constitution's separation of power and curbing judicial overreach within the judiciary. So the entire topic was in respect to this. Let's talk about separation of power. Separation of power in India refers to the distinct functions assigned to the executive, legislative, and judicial branches, ensuring a system of checks and balances to prevent the abuse of authority and promote democratic governance. ये separation of power का मतलब है. Judicial overreach का मतलब क्या है? Judicial overreach occurs when the judiciary exceeds its constitutional limits by intruding into policy matters or making decisions beyond its jurisdiction, disrupting the balance of power and potentially encroaching on the roles of other branches of government. It's called judicial overreach. Many of the times you will see article 142 in news. This article 142 gives the Supreme Court the direct say that in order of public welfare they can say guide anything, like कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे हमारा NJSC आया था, नेशनल जुडिशियल ये कमीशन, ठीक है, जिसमें they were talking about how to elevate judges and how to bring judges, appoint judges and all that. कोलिजियम सिस्टम को ख़त्म करना चाह रहा था. उसको अंडर आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, इट्स अ थ्रेटन
to our to the sovereignty of judiciary. So this multiple times we have seen that this overreach is being done using this article, और बहुत बार सही चीज़ों के लिए भी यूज होता है. So this was all about this particular topic. Now Supreme Court Legal Services Committee appointment, SCLSC. तो इसके बारे में बात करते हैं. तो न्यूज में क्यों था ये? तो जस्टिस BR गवई इज अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ द SCLSC, रिप्लेसिंग जस्टिस संजीव खन्ना. ठीक है, ये बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाई इट वाज इन द न्यूज. तो SCLSC को यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, इसको समझते हैं. तो नॉमिनेशन बाय द डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस थ्रू पावर्स अंडर द लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट. यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 एंड नालसा रूल्स 1995. यहाँ पे नालसा दिया है. इट इज नालसा हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 to provide free legal services to weaker section of society, and recently NALSA has launched LADCS with full-time legal aid lawyers. At state level it is also called SLSA, district DLSA and taluk TLSA. ठीक है. The objective of SCLSC is functions under the act to provide free legal services to marginalized groups under the Supreme Court jurisdiction. सिंपल, फ्री लीगल एड से याद रखना. ठीक है, ऑब्वियसली देर आर अदर एस्पेक्ट्स बट ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, फॉर जुडिशरी. ओके. द composition, the committee composition includes a sitting Supreme Court judge as chairman. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जज चेयरमैन होंगे. एंड मेंबर्स मीटिंग स्पेसिफाइड एक्सपीरियंस, मेंबर्स मीटिंग स्पेसिफाइड एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया. यू विल हैव टू क्वालिफिकेशन. यहाँ पे रूल 10 ऑफ नालसा रूल्स आउटलाइंस द नंबर, एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन ऑफ SCLSC मेंबर्स. यू कैन ऑल्सो ऐसे आप देख सकते हो कि एक बार देख लेना कि रूल्स क्या है. ठीक है, यहाँ पे शायद मैंने डाला नहीं है. ओके. SCLSC कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 9 members including ex officio members like Attorney General of India. Ex officio member मतलब उस once you become the office bearer of as an Attorney General, you become the part of that SCLC member. ठीक है, you become the part of that. The nomination made by the Chief Justice of India, who also appoints the committee's secretary. The center, in consultation with the Chief Justice of India, can nominate additional members meeting specified criteria, who must be eminent individuals with expertise in law or social work. Qualification हमने पढ़ ही लिया है. पर्पस क्या है? तो 1987 में आया था. इट ऑपरेट्स नेशन वाइड ऑफरिंग लीगल असिस्टेंस, ऑर्गेनाइजिंग लोक अदालत्स एंड फॉर्मिंग लीगल सर्विसेज अथॉरिटी. इंपॉर्टेंस. It aligns with constitutional provisions ensuring equal justice and legal aid, particularly for economically disadvantaged citizens. Article 39A. It's this क्या उसको बोलते हैं, fundamental. This is DPSP, Directive Principles. ठीक है, through which system should be guided. It is mandated by Article 14 and 22(1) to establish legal equality and fair justice system. It's a fundamental right. तो just have a basic idea कि किस तरीके से इनको पढ़ लो जाके बेरर एक्ट में. आर्टिकल 14-22 क्या बोलता है, उनका फर्स्ट प्रोविजन क्या बोलता है, आर्टिकल 39A क्या बोलता है. I have tried to incorporate all the important points, but still if you feel इस तरीके से you can prepare more. So let's move to the next topic, that is National Conclave of Primary Agricultural Credit Societies. Okay.